Hello students, this video is of grade UKG, so let us start. In this sheet, we are going to study 3 different parts in which we will get to know about 3 different subjects which are English, Maths and EVS. So let's get started with our first subject of the sheet, English. Fill in the blanks with correct consonants. In these fill in the blanks, we have to fill up the consonants. Okay, consonants fill up करना है. Or you can say you have to fill the missing letters. Missing letters को fill up करना है. Okay, like the first picture is of, पहली picture किसकी है? It is apple. A double P L E, apple. Okay, so we have to fill double P L. Okay, these 3 letters are missing. ये 3 letter missing है, तो हमें यही 3 consonants, यही 3 letters यहाँ पे fill करने हैं. Next is bat. B A T, bat. Next is box. B O X, box. Next word is dash a dash. Okay, यहाँ भी picture नहीं है इसके लिए. What you can make cat, 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 FAT, fat, RAT, rat. कोई भी word आप यहाँ पे बना सकते हो. Understood? But सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स फिल करना है. तो BAT, बैट में A ऑलरेडी रिटन है, B और T क्या है? कॉन्सोनेंट है. CAT, कैट में C और T कॉन्सोनेंट है. RAT, रैट, R और T कॉन्सोनेंट है. FAT, फैट, इसमें भी F और T क्या है? कॉन्सोनेंट है. FAN, फैन, इसमें F और N कॉन्सोनेंट है. So in this way you have to fill up these blanks with the help of correct consonants. Let's revise alphabets A to Z with one words. A for apple. B for ball. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for grapes. H for hen. I for ice cream. J for joker. K for kite. L for lion. M for monkey. N for nest. O for owl. P for parrot. Q for queen. R for rabbit. S for sun. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X for
Xmas tree. Y for yacht. Z for zebra. Okay, so we have read A to Z with one words. These words have their spelling and which also consist of consonant. इन words की जो spelling है उनमें भी बहुत सारे consonants आते हैं. Now let's move to the next section. Help Surya to move through the maze and reach the apple at the other end. Okay, क्या करना है? Simply we have to move Surya from the maze to reach apple. Okay, सूर्या की हेल्प करनी है कि किस रास्ते से जाएं और एप्पल तक पहुंच जाएं. Okay, so I hope you can do this. Like okay, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है ये, बट दिस इज द पाथ यू हैव टू फॉलो. Understood? Yeah. Like this. You can also go. आप इस तरीके से भी जा सकते हो. ओके, यहाँ पे 2 पाथ्स हैं, 2 रास्ते हैं. आप दोनों में से कोई भी जो चूज करो उसके थ्रू आप यहाँ से जा सकते हो. अंडरस्टूड? Now let's move to our last section of this sheet, which is EVS. EVS is based on transport and their ways. Transport और उसके types पर based है. What are transports? Transports are the vehicles which help us to move from one place to another quickly. Okay, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट. और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन के 4 टाइप्स हैं: एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट. मतलब एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन और रेल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन. अंडरस्टूड? सो कार्स को किससे मैच करेंगे? कार्स कैसे हमें ले जाती हैं? थ्रू रोड. सो वी विल मैच इट विथ रोड ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट इज रेलवेज. तो रेलवेज कहाँ चलती हैं? पटरियों पे, रेल्स पे. तो वी विल मैच विथ रेल ट्रांसपोर्ट. शिप्स कहाँ चलती हैं? पानी में. सो इट विल बी द वाटर ट्रांसपोर्ट. इन दिस वे यू हैव टू match these transports to their following transportation. Understood? Yeah. I hope you all have understood the sheet very well. If you are having any kind of doubt, you can ask me. Thank you.